students. So far in the chapter of statistics, I have completed mean, median and mode for the group data. It may be finding the mean or finding the missing frequency, one missing frequency, two missing frequency, all sorts of problems we have completed. Before I proceed to the last part of this chapter, that is called as the Ogive curves, just I want to ask some questions. My first question is, can you see, first of all, you know that for a particular problem, for any problem, you can find mean, median and mode. For a same problem, you can find mean, you can find median, you can find mode. My question is, can for a particular problem, the median class and the modal class, can they be same? My question is, for a particular problem, say for example 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, some frequencies are given. For finding the median class, what is the method? You are adding all the frequencies, you will add it, you are getting the value of n, you are finding n by 2, you are getting a particular value. n by 2 मिलने के बाद आपका काम क्या है? n by 2 से जो वैल्यू आया है उससे थोड़ा बढ़कर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ढूंढना है, नॉट इन द फ्रीक्वेंसी में नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ढूंढना है। एक n by 2 का वैल्यू से थोड़ा बढ़कर यहाँ कहाँ मिलेगा, जो वैल्यू उससे बड़ा है, दैट क्लास इज कॉल्ड एज मीडियन क्लास। आपको पता है मॉडल क्लास कैसा पता करेंगे, उसमें CF की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कॉलम देखोगे आप, जहां फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा वो आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन इज, कैन मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास कैन बी सेम? डेफिनेटली यस, it can be same, it can be different, but that depends on the given data. Keep in mind. Okay, now one more important thing I want to tell you, the mean, median and mode, they are having internal relationship, they are having a relationship between them. That relation is called as empirical relation. Just I will explain you. The relation between mean, median and mode is called as empirical relationship between mean, median and mode. You can expect a one mark question on this one. The relationship between, empirical relationship between. Sometimes they may ask you, what is the empirical relation between mean, median and mode? This is one type of question they may ask you for 1 mark. Or what they will give you? They will give you mean and median and they will ask you find the mode. So for any such question, first of all you should know what is the relationship. And the relationship is like this. Mode is equals to 3 median minus 2 mean. Mode is equals to 3 median minus 2 mean. जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है, यू कैन डू वन थिंग, आप कोई एक प्रॉब्लम ले लो, कोई भी, जितना सारे प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाया, मीन का प्रॉब्लम हो, मीडियन का प्रॉब्लम हो, कोई भी मोड का प्रॉब्लम हो, कोई एक प्रॉब्लम ले लो। एक ही प्रॉब्लम के लिए, फॉर सेम प्रॉब्लम यू फाइंड मीडियन आल्सो, यू फाइंड मीन आल्सो एंड यू फाइंड मोड आल्सो। आपको 3 अलग अलग वैल्यू आ गए, मीन का भी वैल्यू आ गया, मीडियन का भी वैल्यू आ गया, मोड का भी वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या करो आप, कि फॉर्मूला के मुताबिक मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करो और मीन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को माइनस करके देखो, जो भी आंसर आएगा मोड, वो आंसर आपने जो फाइंड आउट किया था मोड, वो दोनों सेम है या नहीं, यू कैन फाइंड इट। ओके, इज इट क्लियर व्हाट इज टू बी डन? फाइंड मीन
मीडियन, मोड सेपरेटली। आपके पास तीन वैल्यूज आ गए, मीन के लिए एक वैल्यू आ गया, मीडियन का भी वैल्यू आ गया, मोड का वैल्यू आ गया यूजिंग द फार्मूला। ओके, उसके बाद क्या करो, जो भी वैल्यू मीडियन आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, मीन का वैल्यू जो आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको दोनों को माइनस करो। जो भी इसका आंसर निकलेगा उसको वो मोड हो जाएगा। वो आंसर और आपने जो फार्मूला से फाइंड आउट किया था मोड, वो दोनों आंसर सेम आना ही चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? सी देयर विल बी 1 मार्क क्वेश्चन। इफ median and mean of a frequency distribution median and mean of frequency distribution is 270 and 220 respectively। कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कौन सा है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट बॉदर्ड आल्सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट दे से फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम द मीडियन इज 270 and the mean is 220. Okay, find mode, find mode। आपको मोड पता करना है ताकि आपको क्या दिया है, व्हाट क्या यूज करके, मीडियन एंड मीन यूज करके आपको मोड पता करना है। यू हैव टू फाइंड द मोड। कम ऑन, पहला फॉर्मूला, मोड इज इक्वल्स टू 3 median minus 2 mean, 3 median minus 2 mean, which is equals to 3 median, मतलब 3 into 270 minus 2 into 220, 2 into 220, which is equals to 27 3s are, it is 810, is it right? 0 7 is 21 carry to 8 minus this is 440, 440. What is the answer? 3 median minus 2 mean, 810 minus 440 gives you how much? 370. 370. Okay, 7 plus 11 carry 1. Yes, so mode of the given data is 370. This is the answer. Let me take one more problem. If mean and median of a frequency distribution is 7. Mean and median of frequency distribution is 7 each. Find mode. For a particular problem, mean also 7, median also 7, find mode. Come on, apply the formula. Mode is equals 3 median minus 2 mean, which is equals to 3 into 7 minus 2 into 7, 21 minus 14, answer is equals to 7. So mode is also equals to 7. That means for a particular problem, mean, median and mode, all three can be same or all three can be different. Anyway, that are all based on the data. This is about the empirical relationship between mean, median and mode. There will be a 1 mark question. Either they may ask you the formula or they may ask you to find the mode or find the median. Out of these three, 2 will be given to you and third you have to find it. But formula remains the same. My dear student,
Now we are in the last part of this chapter, and the last part is a very, very important part of this chapter, that is called Ogive curves. Ogive curves. This is totally a new concept for you. It is not Ogive. The spelling is Ogive, but the pronunciation is Ogive. Ogive curves. What are these ogives? What are these ogives? How it can be drawn? What is the use of that? All I will tell you. Listen very carefully. You can expect a 3 marks question on ogive curves, and that has to be drawn only on the graph paper. Okay. What are ogives? Ogive curves are S-shaped freehand curves. What are ogives? Ogive curves are S-shaped freehand curves. Freehand curves which are drawn between cumulative frequency and class interval. Cumulative frequency and class interval. These curves are also called cumulative frequency polygons. Cumulative frequency polygons. Cumulative frequency polygons. You know about the histogram, you know the line graph, frequency polygons. Like this is cumulative frequency polygons. So they are S-shaped freehand curves. S-shaped. See, that means whenever the ogive curves are drawn, you are getting a shape like this, S-shape. Freehand curves. It is not like your line graph, joining the points. No, this is a freehand curve. It is a freehand curve drawn between cumulative frequency. See, cumulative frequency. Somewhere we have heard this word cumulative frequency. My dear children, in the previous video we have heard this word cumulative frequency in connection with the median. To find the median, we have drawn the third column, class interval, frequency and the cumulative frequency. That means somewhere these ogive curves are related with the median. See, they have drawn between the cumulative frequency. What type of relation they are having with median, I will tell you later. But since we are using the cumulative frequency here, somewhere that is related with median. Cumulative frequency and class interval. But one doubt we are having. क्या है? देखो, आपको मैंने समझा दिया. क्या है? एक ग्राफ है जिसमें यहां आएगा क्लास इंटरवल और यहां आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्लास इंटरवल में दो नंबर रहते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. लेकिन उसमें आपको कौन सा वैल्यू लेना है? बस समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग? सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, तो देखो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, छोटा नंबर है 20 to 30, बस उतना ही, बस 7, 10, 3. चलो इसको मैं ऐड कर दिया, 7 plus 7, 7 plus 10, 17, 17 plus 3, 20. अब प्रॉब्लम क्या आता है? They say these are drawn
frequency and the class interval. अब बात ये आता है, ये 7 के साथ 0 आएगा, ये 7 के साथ 10 आएगा, ये 17 के पास ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 10 को लेंगे या 17 के साथ 20 को लेंगे, ये तो डाउट रहेगा, क्योंकि दिस इज सिंपली क्लास इंटरवल। आपको ओजिव कर्व ड्रॉ करना है किसके साथ, क्लास इंटरवल वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ दो वैल्यू होंगे, एक दोनों में से कौन सा चुनना है एक क्लियर नहीं है, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लिसन वेरी केयरफुली। ये ओजिव कर्व्स में there are two types of ogives. Listen very carefully. This introduction, if you have understood well, the solving the problem will be very simple for you. अगर ये बेसिक अगर आपको पता नहीं चला तो आगे आपको दिक्कत हो जाएगी। So listen very carefully. ये ogive curves में there are two types of ogives. I will write here. ये अभी नहीं चाहिए मुझे, graph and take later. Listen very carefully. Ogive curves. देखो, ogive curves. In this, there are two parts. The first one is called as less than ogive, and second one is called as more than ogive. ओजिव कर्व्स उसमें दो पार्ट्स, लेस देन ओजिव, मोर देन ओजिव। लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव बोथ आर ड्रॉन बिटवीन क्लास इंटरवल वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चाहे वो लेस देन ओजिव हो उसको भी इसके साथ ही ड्रॉ करना है, चाहे वो मोर देन ओजिव करो उसको भी हमें क्लास इंटरवल वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ही ड्रॉ करना है। लेकिन अब सवाल क्या है, लोअर लिमिट कब लोगे, अपर लिमिट कब लोगे, यही प्रॉब्लम है। चलो वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। लेस देन ओजिव कर्व इज ड्रॉन बिटवीन, देखो, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके साथ भी आएगा, उसके साथ भी आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्लास इंटरवल में दो नंबर्स है, लोअर लिमिट कब लेना है, अपर लिमिट कब लेना है, यही प्रॉब्लम है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ही नंबर है, लेकिन क्लास इंटरवल में दो नंबर होंगे, वो दो नंबर में किसको कहां लेना है, वही मैं समझाने जा रहा हूं। लेस देन जब बात आती है, when we talk about the less than ogive curve, आपको अपर लिमिट लेना है, मतलब अगर यही प्रॉब्लम लेस देन ओजिव कर्व के लिए पूछा गया है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है 10 7 20 17 30 20, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करता हूं मोर देन ओजिव कर्व्स की, this more than ogive curves are drawn between lower limit of the class interval, LLCI, lower limit of the class interval, upper limit of the class interval versus क्या है, cumulative frequency। देखो, फिर क्या आपके पास डाउट हो, क्यों सर, ऐसा क्यों, क्या लेस के लिए मैं लोअर लिमिट नहीं ले सकता है? Can't I take lower limit here and upper limit here, ताकि हमको याद करने में आसान हो जाएगा। मोर के लिए अपर लिमिट, लेस के लिए लोअर लिमिट, इजी भी था, बट नो माय डियर चिल्ड्रन, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर क्यों, why, if the question is like this, I will explain you that also when I take a problem। लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में लेना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन, पूरा दिमाग से आप सोचो एंड लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं ओजिव की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द ओजिव कर्व्स, देख लो, व्हेन आई टॉक अबाउट द ओजिव,
मैं आपको ए नहीं क्लियर कर रहा हूं कि वो लेस देन ओजीयू है या मोर देन ओजीयू कर, आपको पता नहीं, सिर्फ मैं ओजीयू की बात कर रहा हूं। if I talk about the ogive, then you can say ogive curves are drawn between class interval versus cumulative frequency। देखो मैंने कौन सा ओजीव करके नहीं बोला, आप ही नहीं बोलोगे कि क्लास इंटरवल में किसको लेना है। सो सिंपली इन जनरल वी कैन से ओजीव कर्व्स आर ड्रॉन बिटवीन क्लास इंटरवल वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। काम खत्म। याद रखो ओजीव में भी दो ओजीव है, क्लास इंटरवल में भी दो वैल्यू है, लेकिन आप जब ओजीव की बात करते हो मैं सिर्फ क्लास इंटरवल की बात करता हूं ना, आप इधर बाइफरकेट करोगे ना मैं इधर क्लास इंटरवल को बाइफरकेट कर रहा हूं। ओके, सो वंस अगेन ogive curves are, listen to me, ogive curves are drawn between class interval versus cumulative frequency। बात खत्म। लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ ogive नहीं पूछेंगे। Definitely they will not ask you to draw a ogive curve, no, they will clearly mention whether you are asked to draw a less than ogive और ए मोर देन ओजीव। आपको एग्जाम में एक कंपलसरी देना पड़ेगा उनको कि आपको लेस देन ओजीव ड्रॉ करवाना है या मोर देन ओजीव आपसे करवाना है। डेफिनेटली दे विल आस्क द एग्जामिनर लाइक दिस ओनली, ड्रॉ ए लेस देन ओजीव कर्व फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक पर्टिकुलर ओजीव की बात आती है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ओजीव, अब स्टार्ट करेंगे। लेस देन ओजीव कर्व इट इज ड्रॉन, देखो जब लेस ओजीव आता है तो वैल्यू मोर देना चाहिए, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ऐसा याद रखना है। लेस के लिए लेस वैल्यू नहीं लोगे, लेस के लिए मोर वैल्यू लोगे। अब और एक बार, लेस देन ओजीव कर्व, कम ऑन, लेस देन ओजीव कर्व इज ड्रॉन बिटवीन अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। देखो उन्होंने ओजीव कौन सा करके स्पेसिफाई कर दिया, मैंने क्लास इंटरवल को कौन सा करके स्पेसिफाई कर दिया। लेस ओजीव के लिए मोर क्लास इंटरवल लेना, बड़ा वाला क्लास इंटरवल लेना, upper limit. Less than ogive curve is drawn between upper limit of the class interval versus cumulative frequency, whereas more than ogive curve is drawn between lower limit of the class interval versus cumulative frequency. Cumulative frequency तो same है, चेंज कहाँ आता है, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट या अपर लिमिट। लेस देन ओजिव कर्व के लिए अपर लिमिट, मोर देन ओजिव कर्व के लिए लोअर लिमिट। ये याद रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं या वो सोचते हैं लेस को छोटा वैल्यू ले लेंगे, नहीं, लेस देन ओजिव कर्व के लिए बड़ा वैल्यू लेना है, अपर लिमिट लेना है, और मोर देन ओजिव कर्व के लिए लोअर लिमिट लेना है। ये आप याद रखना है। We will summarize once again. Later you can write it. Listen. Less than ogive curve is drawn between upper limit of the class interval versus cumulative frequency, whereas more than ogive curve is drawn between the lower limit of the class interval versus cumulative frequency। इतना अगर आप याद रखोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट। इससे फायदा क्या है, एक ओजीव से हमें फायदा क्या है? लिसन वेरी केयरफुली। यूजिंग लेस देन ओजीव कर्व वी कैन फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ओजीव कर्व, लेस देन ओजीव कर्व अगर ड्रॉ करोगे, अगर आप लेस देन ओजीव कर्व ड्रॉ करोगे, वो ग्राफ से ही हम मीडियन का भी पता कर सकते हैं। जो मीडियन हमें फॉर्मूला से पता करते थे, और जो हम मीडियन हम फॉर्मूला से पता करते थे, लाइक मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इनटू H। अब जो फॉर्मूला से हम मीडियन पता करते थे, वही मीडियन वी कैन फाइंड यूजिंग द ग्राफ आल्सो। वो कैसा पता करना है, क्या करना है, कैसे ड्रॉ करना है, दैट ऑल आई विल टेल यू, बट फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है, डोंट राइट दिस एग्जांपल है गिवन, और एक्सेप्ट दैट ऑल थिंग्स। लेस देन ओजिव कर्व अपर लिमिट वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन ओजिव कर्व लोअर लिमिट वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इतना याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टेकन वन प्रॉब्लम इन व्हिच इट इज आस्क्ड फाइंड a less than ogive curve। I told you very clearly in the examination or in any problem, they have to specify whether it is a less than ogive curve or it is a more than ogive curve। So this is a problem of less than ogive curve। मैंने आपको पहले ही बता दिया है
less than Ogive curve is drawn between the upper limit of the class interval versus cumulative frequency. आपके दिमाग में अभी भी एक डाउट होगा कि अपर लिमिट क्यों, उसका आंसर मैं दे दूंगा। कम ऑन, क्लास इंटरवल आपको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, याद रखना ये प्रॉब्लम तो Ogive curve मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मतलब आपका थर्ड कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना ही है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने थर्ड कॉलम बनाया था इन द केस ऑफ मीडियन। कम ऑन, 8 as it is, 8 plus 17 is 25, 25 plus 24 gives you 49, 49 plus 12 gives you 61, 61 plus 9 gives you 70, and I can write here n is equals to 70, n is equals to 70. Come on, हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। This is a graph, and what I have done here, this is x-axis, this is the x-axis, and this is y-axis. Okay, it was told you already, I have told you very clearly, it is drawn between the class interval versus cumulative frequency. class interval हमेशा x-axis पर आएगा, cumulative frequency हमेशा y-axis पर जाएगा। It is drawn between the class interval versus cumulative frequency. Okay, come on, थोड़ा हम we will question ourselves. Okay, अब यहाँ 0 to 10 समझो एक बच्चों का मार्क्स है, 50 मार्क्स का एग्जाम समझो PWT 2, 50 मार्क्स का एग्जाम हो गए, पेपर इवैल्यूएशन में हो गए और बच्चों को मार्क्स भी दे दिए। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कितना बच्चे 10 से कम लिए? I will tell in English. How many students have scored less than 10? Less than 10. See, there is no meaning if I ask you how many of you have scored less than 0. अरे बच्चा कम से कम 0 मार्क्स तो लेगा ही, और उसने कुछ भी नहीं लिखा तो उसको 0 मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन ए ने उठता है हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 0, ये बकवास क्वेश्चन है, राइट? सो आई विल आस्क द क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 10, लेस देन, इन्होंने पूछा है लेस देन को ऊपर, मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं लेस, लेकिन वैल्यू कौन सा लिया मैंने अपर लिमिट लिया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 10, देखो ए वैल्यू अपर लिमिट का वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन तो लेस देन Ogive के बात हो रहा है, लेस देन Ogive के बात हो रहा है, लेकिन कौन सा लिमिट ले रहा हूं? अपर लिमिट ले रहा हूं। देखो हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 10 एंड देयर आर 8 स्टूडेंट्स, इसलिए लेस देन Ogive के लिए हमेशा अपर लिमिट लेना है। थोड़ा और क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे, लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 10 मार्क्स? लेस देन 10, तो 8 बच्चे खड़े हो गए, 8 बच्चे खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने लेस देन 10 लिया है। आगे का क्वेश्चन सुन लो, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 20? अरे लेस देन 20 मतलब जो 18 मार्क्स मिला है वो भी लेस देन 20 है। अ बॉय हु स्कोर्ड 11 मार्क्स आल्सो लेस देन 20, a boy who scored 8 marks also less than 20 only, मतलब 20 से कम कितना लिया है? 70 नहीं है, it's not 70, 25 students have scored less than 20. less than 20 का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अरे क्लास में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें 6th क्लास के बच्चे हैं, 7th के भी बच्चे हैं, 8th के भी बच्चे हैं, 9th के भी बच्चे हैं, 10th के भी बच्चे हैं। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कितना बच्चे 13 साल से कम है? 13 साल से कम है, तो 12 साल के बच्चे भी आए उसमें, 11 साल के बच्चे भी आ गए, छोटे बच्चा भी आ गया, 7 साल का बच्चा भी आ गया। 13 साल से कम मतलब अगर छोटा पापू से पकड़कर 13 साल तक सभी बच्चे आ गए लेस देन 13 years, like that here how many students have scored less than 20? ये तो 70
ये 17, 10 और 20 के बीच में जो बच्चे हैं उनका नंबर है 17। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 20, मतलब पूरे 25 बच्चे, मतलब ए भी आ गए, ए भी आ गए, दोनों मिलाकर जो है 25। दिस इज द आंसर। हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 20। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन, हर बार मैं पूछ रहा हूं लेस देन, क्योंकि ये लेस देन मुझे के बात हो रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 30, देखो अपर लिमिट ले रहा हूं अपर लिमिट, लेकिन बात कर रहा हूं लेस देन मुझे कर दो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 30, माय डियर चिल्ड्रन 24 नहीं है, 30 मार्क्स से कम जिसने लिया है, ए भी बच्चे हैं 30 मार्क्स से कम, ए भी बच्चे हैं 30 मार्क्स से कम, और ए भी बच्चे हैं 30 मार्क्स से कम, मतलब टोटल कितना बचे? 49 students have scored less than 30. Hope that you are understanding what I am telling. Now fourth question, how many students have scored less than 40? Less than 40 कितना बच्चों ने लिया है? ए भी बच्चे हैं less than 40 वाले, क्योंकि 10 मार्क्स से कम है नो डाउट, लेकिन 40 से भी कम ही है ना, 40 से कम किसने लिया है? ए भी बच्चे हैं, ए भी बच्चे हैं, ए भी बच्चे हैं, ए भी बच्चे, सब बच्चों ने 40 से कम लिया है, मतलब 61 students are there less than 40, less than 50, less than 50, सारे के सारे बच्चे हैं less than 50। चलो चाहे तो अगर आप ऐसा मत पूछो सर 50 में बच्चे लिए होंगे, हो सकता है, लेकिन मेरा जो डाटा है उसमें कोई 50 नहीं लिया है, नहीं तो मैं एक अलग कॉलम बनाना पड़ता था, 50 to 60 भी मैं कर सकता था, लेकिन यार इनफ। ओके, आपको समझ में आना चाहिए क्या मैं कहना चाहता हूं, व्हाट आई वांटेड टू टेल, दैट शुड बी कन्विंस्ड टू यू। सी आई एम टॉकिंग अबाउट लेस देन ओजिव, बट आई एम टेकिंग द अपर लिमिट, सो आई विल राइट हियर 10, 20, 30, 40, 50 बस। ओके, तो अब वैल्यू कैसे लेना है? इट इज ड्रॉन बिटवीन अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 और 8, 10 और 8, समझो 8, 10 और 0 10 के बीच में 8, समझो कहीं भी यहां है 8। ओके, आपके ग्राफ में आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा 8 यहां। ओके, उसके बाद 20 के साथ 25, देखो यहां से अपर लिमिट वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 20 के साथ 25, 20 के साथ 25, 20 के साथ 25, come on, 25 somewhere here, 25 somewhere here. Okay, this is what? 20, 25, 20, 25. Okay, come to the third, 30, 49, 30 के साथ 49 somewhere here, 49 somewhere here. Okay, this point is what? 30, 49 हो गया थर्ड वन। फोर्थ 40, देखो अपर लिमिट ले रहा हूं 40 and 61, see less than ogive curves are drawn between upper limit of the class interval versus cumulative frequency। अब आपको पता चला होगा क्यों मैं अपर लिमिट की बात कर रहा हूं। 40, 61, how many students have scored less than 40? 61 students are there। 40, 61 somewhere here, let me check it, 61, okay, this is 40, 61, at last 50, 70, it is 50 and 70, 50 and 70, I will check it, 50 and 70, it is here, this is 50 and 70. I have to join these not by a straight line, it's not a line segment, it's a freehand curve, come on, I will join them using
using a freehand curve. So this is called as Ogive curve. This is called as Ogive curve. Okay, ये तो हो गए. आपको 3 मार्क्स मिल गए. चलो, let me write here. Scale 1 centimeter is equals to 10 minutes. 1 centimeter is equals to 10 minutes. X equal to same है, y equal to same है. 2 बार लिखने की जरूरत है, एक ही बार लिखे तो बस. 1 centimeter is equals to 10 centimeter is the scale. Okay. Problem खत्म. Definitely you are going to get 3 marks. लेकिन मेरा अभी भी थोड़ा सिखाना बाकी है. यहां से आप मीडियन कैसा पता कर सकते हैं? हाउ टू फाइंड? मैं इधर आगे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा. ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड मीडियन. इसके साथ साथ आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि मीडियन का पता करो. आप ओजिव कर्व भी फाइंड आउट करना है, उसके साथ साथ आपको मीडियन भी पता करना है. कम ऑन, बहुत आसान. मीडियन इज वेरी सिंपल, लेकिन इट इज नॉट बाय यूजिंग द फार्मूला. जस्ट बाय द ग्राफ. मैं आपको ग्राफ से उसको कैसा ड्रॉ करना सिखाऊंगा. एंड लेटर आई विल शो यू हाउ टू वेरीफाई योर आंसर यूजिंग द फार्मूला आल्सो. कम ऑन, आपका काम क्या है? आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन यूजिंग द ग्राफ. I will first find n by 2. n by 2 तो यह चीज नहीं, आपको मालूम है. Finding the median means first you will go for the n by 2 only. Come on, n by 2. 70 divided by 2, answer is 35. Okay? थोड़ा इधर ध्यान दे दो. n by 2 का वैल्यू आ गया 35. अब आपको क्या करना है? ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो y एक्सिस है, इसमें आपको एग्जैक्टली 35 कहां है ढूंढना है. एग्जैक्टली 35. देखो, हम जब फार्मूला मेथड अप्लाई कर रहे थे तब मैंने क्या बोला आपको? यू सी द नंबर व्हिच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 35 बोला था यहां. लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं, व्हाट आई एम टेलिंग नाउ, यू फाइंड एग्जैक्टली 35 इन द y एक्सिस. और 35 यहां 30 और 40 के बीच में आ गया 35. ठीक है, आपका काम क्या है? From this 34, why this 35 is to be chosen? Because n by 2 is equals to 35. Come on, यहां से आपको x एक्सिस के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी. ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू x एक्सिस. कहां तक? यहां टच होना है. ओजिव कर्व के लिए टच होना है, वहां तक एक x एक्सिस के लिए एक पैरेलल लाइन बनाओ. ओके, अब क्या करना है? यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस के लिए. यहां से आपने पैरेलल ड्रॉ कर दिया x एक्सिस के लिए. अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. आई विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर. कम ऑन, यस. जहां आकर मिल गया, दिस इज द मीडियन. समझो, मेरा तो स्केल एग्जैक्ट नहीं है, तो भी मैं कहूंगा 21, 22, आसपास 23. ओके, 25 तो नहीं है, 23 या 24 होगा. दिस इज द मीडियन. आई डोंट नो एग्जैक्टली 23 और 24 होगा, लेकिन आपको मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा. आई विल शो द वेरिफिकेशन आल्सो. लेकिन एग्जाम में आपको नहीं पूछेंगे, डेफिनेटली नॉट आस्क टू वेरीफाई. आपको मैक्सिमम पूछेंगे फाइंड द मीडियन. आपने मीडियन पता कर लिया है, योर वर्क इज ओवर. बट आई विल शो यू हाउ टू वेरीफाई योर आंसर. कम ऑन, n by 2 तो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है. लेट मी गो फॉर द फार्मूला. मीडियन इज इक्वल्स टू n plus n by 2 minus cf divided by f into h. Okay, first I have to go for the median class. How to find the median class? 35 is n by 2. इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू, slightly greater number than 35, where it is in the cumulative frequency. 35 से just bigger is 49. मतलब 20 to 30 is the median class. ये होगा
This is called as CF. This is called as F. Okay, come on. Let us solve it. देखेंगे आंसर कितना है. Median is L. L means lower limit. It is 20 plus n by 2. आपके पास अवेलेबल है 35 minus CF. CF मतलब इसका previous value मतलब 25 divided by F frequency. Frequency है 24 into H. H यानी size of the cross interval मतलब 10. Okay, which is equals to 20 plus it is 35 minus what? 35 minus 25 10 into 10 100 divided by 24 100 by 24. Okay, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे. 4 से कैंसिल हो जाएगा. 4 12 सॉरी 4 6 4 25 क्या आ गया आंसर. It is I will solve it 20 plus 25 by 4 25 by 4 मतलब 20 plus 4 25 by 6 sorry 25 by 6 6 4s are 24 6 4s are 24 1 10.1. Is it right? 6 4s are 24 1 10. Okay, so answer is 24.1 is the median. मैंने आपको यहाँ बताया था आंसर somewhere 23 and 24. The answer is 24.1 is the median. So this is how you can find the median using the Ogive curves. Right, children? Very very interesting. आपको भी मजा आया होगा एक Ogive curve ड्रॉ करके. अब we will solve few more problems and I will teach you how to draw more than Ogive curves also. But first note this.